हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी स्टांस के बारे में एज ऑफ दिसंबर 2025। इसमें हम रेपो रेट कवर करेंगे और की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कवर करेंगे और कुछ गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस विच वाज रोल्ड आउट इन द मंथ ऑफ सितंबर दैट वी विल डिस्कस, एंड देन some of the other parameters, other key factors which are important to be considered for the repo rate decisions that we will discuss. तो शुरू करते हैं रेपो रेट के साथ। 7 फरवरी से लेके 5 दिसंबर 2025 तक के अनाउंसमेंट्स की जानकारी मेरे पास है। 7 फरवरी को रेपो रेट था 6.25%। उसके बाद में ग्रेजुअली कम होते होते 5 दिसंबर को 5.25% इज द रेपो रेट। तो हम कह सकते हैं ओवर द पीरियड 100 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम हुआ है। 9 अप्रैल को 6% था, जो कि 7 फरवरी के बाद का अनाउंसमेंट था। उसके बाद 6 जून को 5.5% था। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं करीब 5 या 6 महीनों में आरबीआई ने करीब 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम किया था। उसके बाद 6 अगस्त को कांस्टेंट रखा था 5.50, और 5 दिसंबर को जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है इस महीने में, वहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 5.25% पर रखा है। तो ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम हुआ है, विच इज़ एक्चुअली गुड। और रिसेंट अनाउंसमेंट जो हुआ है 5 दिसंबर को, बाय स्लैशिंग 25 बेसिस पॉइंट्स, आरबीआई ट्राइड टू पंप liquidity of around $16 billion into the system. Now moving on to the key economic indicators, we will discuss about CPI, WPI, IPP, GDP growth. यहाँ भी हम जून से लेकर नवंबर महीने तक का डेटा मेरे पास है, और जून से लेकर नवंबर का हम एनालिसिस करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई के साथ। जून में ये था 2.10%, और ये ग्रेजुअली कम होते होते नवंबर में 0.71%, जो कि काफ़ी अनयूजुअली कम है। तो ये है लेटेस्ट नवंबर का जो डेटा है। और होलसेल इन्फ्लेशन जो है इट इज़ थ्रू आउट ऑन द निगेटिव साइड। जून में -0.13% था। उसके बाद कुछ समय कांस्टेंट रहा। अक्टूबर में ये निगेटिव 1.21% था, और नवंबर में 0.32 ऑन द निगेटिव साइड था। तो ओवरऑल थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस है, बट मोस्टली इट्स ऑन द नेगेटिव साइड। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट देखेंगे। जून में था 1.5%। उसके बाद इट ग्रेजुअली इंक्रीज 3.5% इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, और सितंबर को इट वाज एट अ पीक 4%, और अक्टूबर में इट हैज़ कम डाउन टू 0.4%, मे बी बिकॉज ऑफ हॉलीडेज और अनप्रिडिक्टेड ट्रेंड्स विच इंडिया विटनेस्ड। और ये रहा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट। उसके बाद हम जीडीपी पे मूव करते हैं। आई हैव 2 फिगर्स फॉर क्वार्टर एंडिंग जून। द जीडीपी वाज 7.8%, और क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2025 द जीडीपी वाज एट 8.2%। तो जो सितंबर क्वार्टर का एंडिंग रहा, उसमें इस साल का जीडीपी जो है दैट इज़ एट अ हाई 8.2%। तो उसको काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं। जीडीपी जो हमने काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस किया है इस साल में। अर्ली ईयर आई थिंक मार्च एंडिंग का जो जीडीपी था दैट वाज अराउंड 7.4%। सो वी कैन सी from the fourth quarter last year, then first and second quarter, we could see gradual increase from 7.4 to 7.8 to 8.2, and hopefully it would further increase in the financial year, I would say, given some holiday season in the current quarter. It may have some dip, but overall I think because of some policy decisions by the RBI, and then some major decisions by government basically on the GST side, it would definitely boost the production, and it would
propel the positive sentiment. So I have covered this key economic indicators. You could understand it, the pattern actually. Now I'll move to the next part, which is government's big decision, which was announced on 22nd September 2025, which is GST rationalization. It was effective from this date. And this decision would have been made quite earlier in the year, and it would have been in the process for quite some months to be rolled out on 22nd September 2025. तो जानते हैं जीएसटी रैशनलाइजेशन के फ़ायदे किन किन पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से हुए। फर्स्ट, सिटीजन्स के लिए करीब 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ का बेनिफिट हुआ है। ओवरऑल पूरा जो इंडियन सिटीज़न वर्ग है, कंजम्पशन स्टिमुलस हम कह सकते हैं। उसके बाद एमएसएमईज़ के लिए एक लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ है करीब 4.5 से 5,000 करोड़ का। और कॉरपोरेट्स के लिए एक ऑपरेटिंग कॉस्ट एफिशिएंसी इसने चैनलाइज की है, विच वुड हैव गिवन एडवांटेज अप्रॉक्सीमेट 20,000 से 30,000 के करीब, 20,000 से 30,000 करोड़ के करीब, which may be these are the relative figures which are being picked up from the online sources. So just take a perspective basically, and for the exact figures you could refer to the government authorized sites. तो यहाँ तक आए थे हम, कॉरपोरेट्स तक आए थे। कॉरपोरेट्स को कैसे बेनिफिट हुआ है? गवर्नमेंट को हालांकि इनिशियल रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जो कि 47,000 से लेके 48,000 करोड़ का है, बट उसे बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने लग्जरी और जो टोबैको एरिएटेड ड्रिंक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी स्लैब 40% कर दिया है। तो उस ज़रिए गवर्नमेंट चाहती है कि करीब 45,000 से 50,000 करोड़ का जो घाटा हुआ है बाय रिड्यूसिंग जीएसटी ऑन अदर सेगमेंट्स, दैट शुड बी कवर्ड। तो ये रहा जीएसटी रैशनलाइजेशन से रिलेटेड। अभी हम थोड़ा सा रिलेट करना चाहेंगे जीएसटी रैशनलाइजेशन को जो करंट रेपो रेट है और जो रिटेल इन्फ्लेशन है और जीडीपी ग्रोथ रेट है उनके साथ। तो हम देखेंगे यहाँ डेफिनेटली इट इज़ अ बूस्ट फॉर सिटीजन्स। जीएसटी रैशनलाइजेशन के थ्रू काफ़ी हद तक सिटीजन्स को एक राहत मिली है और उन्हें एक लिक्विडिटी प्रदान की गई है, जहाँ से सिटीजन्स दे कैन एक्सपेंड मोर एंड इफ दे वांट दे कैन इन्वेस्ट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स। इसके बाद एमएसएमई और कॉरपोरेट्स, इन्हें काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नहीं बट डेफिनेटली दे डू हैव आई वुड से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हम कह सकते हैं, एक एनर्जेटिक और एक एनर्जाइजिंग एक स्पीडी प्रोसेस हम कह सकते हैं जो कि इम्प्लीमेंट की गई है। अगर स्ट्रैटेजिक लिवरेजेस फॉर बिजनेसेस हम देखेंगे थ्रू जीएसटी रैशनलाइजेशन, तो उसमें एक पहला पार्ट वर्किंग कैपिटल रिकवरी का आता है बाय अलाइनिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड रेट्स। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म 5% फॉर टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर्स। बिजनेसेस नो लॉन्गर फेस इन्वर्टेड ड्यूटी वेयर दे पे मोर टैक्स ऑन इनपुट्स दैन दे कलेक्ट ऑन सेल्स। इसके बाद डिमांड मल्टीप्लायर, द 2 लाख करोड़ रिटर्न टू सिटीजन्स डायरेक्टली फ्यूल्स डिमांड फॉर एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, which led to 9.1% manufacturing growth seen in Q2 FY 2025-26. Now we will cover India Forex reserves and USD INR rates. यहाँ हम देखेंगे पिछले कुछ लास्ट 5 क्वार्टर्स का डेटा हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हाउ द RBI has tried to manage the USD INR rate and how they are managing it through the forex reserves. चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2024 से। दिसंबर 2024 में इंडिया हैज़ द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ around
645 यूएस बिलियन डॉलर्स। और तब हमारा जो यूएसडी आईएनआर रेट था दैट वाज 84.5 टू 85.4, इस रेंज में इंडियन रुपीज was trading against the dollar. Then moving to March 2025, we could see there's a reduction of 4 US billion dollars in the forex reserves. It was around 640 US billion dollars during that time, and the rate USD INR rate was around 86 to 87 INR per dollar. Then, if you look at June 2025, the forex reserves increased by around 15 US billion dollars. It was at around 655 US billion dollars, and the INR USD rate was 85 to 86 INR per USD. Moving to quarter ending September 2025, the forex reserves was at high, at peak for the financial year, driven by strong FPI inflows and valuation gains as the USD depreciated briefly against other major currencies during that period. Then during this time frame, which is December 2025, we are at the mid of December 2025, we do have estimated forex reserves as of now around 687 US billion dollars, which is almost 690 US billion dollars, and the rate INR USD rate is 90 to 91 INR per USD. So if you look at the pattern, you could see actually when the INR has depreciated sharply, the RBI has intervened, and they would have liquidated some of the forex reserves to buy the Indian currency, probably to strengthen it basically. So that's the that's the basics. I think that's the basic part of it, but there are so many intricacies involved, and definitely it's out of the context of this video to go into that. So we will just stay here. Okay, so let's look at the recent trends and key insights. Active currency management, and the recent data highlights the RBI's shift from a net buyer to a net seller of foreign currency to manage volatility caused by global headwinds and importer demand for dollars. Then global position, even after market interventions, India maintains the fourth largest foreign exchange reserves globally, a strong buffer against external vulnerability. एक स्ट्रॉन्ग बफर हम कह सकते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल अनसर्टनिटीज और जियोपॉलिटिक्स. आगे चलते हैं. गोल्ड एक्यूमुलेशन, गोल्ड रिजर्व्स हैव इंक्रीज सस्टेनेबली substantially, rising to constitute nearly 15% of the total reserves, reflecting a safe haven asset strategy amidst geopolitical tensions. So that's the overall take on the forex reserves and the USD INR rate. Now moving to the next part. Okay, now let's look at the global trade. This section is for the global trade, the total global imports versus total global exports. Just let me give you some overview around it. India's total global trade, combined merchandise and services, has reached record levels in 2025, with exports achieving an all-time high of $825 billion for the 2025-25 financial year. In the current 25-26 fiscal year, both the first and second quarters recorded the highest ever exports for their respective periods. So let's look at the total exports and imports and try to analyze. तो हम जानेंगे डेटा फ्रॉम द क्वार्टर एंडिंग December 2025 till the latest December 2025 quarter. Okay, so for the quarter
quarter ending December 2024, Indian total exports were at 182, around 182 US billion dollars versus total imports of 212 US billion dollars, a net deficit of around 30 US billion dollars. Then if we move to the next quarter ended at March 25, the exports were at around 220 US billion dollars versus the imports which were approximately at 230 US billion dollars, deficit of around 10 US billion dollars. Then moving to the next quarter ending June 25, we did had total global exports of around 210 US billion dollars versus 230 US billion dollars imports, where we did had a deficit of around 20 US billion dollars. Then quarter ending September 2025, we did had exports of around 202 US billion dollars versus 242 US billion dollars import, deficit of around 40 US billion dollars. And the latest estimated figures for supposedly finishing this quarter, December 25, is around, as of date, 146 US billion dollars exports versus 175 US billion dollars imports, net deficit of around 28 US billion dollars. So if you see, it's on the deficit on the negative side, but that has been the case many times. But the notable point is the improved exports, I would say, as of now for the fiscal, for the financial year actually 24-25, India has recorded all-time high 825 US billion dollars exports, which is very remarkable and which is very appreciable, I would say. So now let's try to summarize or analyze actually from this data. Services exports have been the primary driver of India's trade resilience, reaching an all-time high of 387 US billion dollars in FY 24-25, 13.6% annual growth. Then merchandise momentum. Non-petroleum merchandise exports also hit a historic high of around 374 US billion dollars in 25, led by nearly 40% surge in electronic goods and significant growth in drugs and pharmaceuticals. Export destinations: USA, UAE and China remain India's top 3 export partners in 25, with exports to Spain and Hong Kong showing the fastest relative growth, exceeding 40% and 23% respectively. Trade deficit mitigation: while the merchandise trade deficit widened in late 25 due to sustained domestic demand for gold and electronics, the growing services surplus continued to keep the overall trade balance manageable. So that's the overall about global trade. Now let's move to the next part. So far we have covered the repo rate, then the key economic indicators. We touched upon GST rationalization. We have covered the forex reserves and the USD INR rate, and we have covered the global trade as well. Now let's move. Let's try to summarize the overall content of this video we discussed so far. The first point, while we analyze and summarize, inflation is unusually low. Headline CPI fell through 2025 into multi-year lows of 0.25% in October and 0.71% in November, and core inflation moderated, giving the RBI room to ease without breaching its 4% medium-term aim. Wholesale prices are weak. WPI entered deflation in October-November 2025. Example, negative 1.21% in October, negative 0.32% provisional in November. Reducing cost pressures. GDP has been robust in recent quarters. India recorded strong real GDP growth in
2025, quarter 1 April to June with 7.8%, and quarter 2 July to September 8.2%, which means easing can be pursued without a near-term recession risk. The RBI appears to be balancing supportive monetary policy with close monitoring of growth and financial stability. External and forex pressures. The rupee has weakened at times, recently trading near record lows in November-December 2025. It has almost reached 91 rupees per US dollar, prompting the RBI to manage reserves and possibly intervene to avoid disorderly moves. Forex reserves have been large, almost we discussed, so it's almost at 690 US billion dollars as of December 2025, giving some space for defense when needed. Those forex dynamics do create a policy trade-off. A weaker rupee can feed inflation via import prices, which could limit aggressive easing. Liquidity and banking sector stance. The RBI coupled the December rate cut with liquidity support, announced facility of 16 US billion dollars by easing 25 basis points in the repo rate, signaling it wants to ensure functioning credit flow and keep borrowing costs benign for firms. The overall summary, I would say RBI is likely reasoning what could be from my perspective, with headline inflation well below the central bank's 4% target and wholesale prices showing deflationary signs. The immediate inflation risk from domestic demand is low. That gives the RBI room to ease policy to support investment and credit demand, especially since GDP prints have been strong and policymakers want to sustain momentum. The governor's statement that rates should stay low for a long period signals a preference for accommodative policy while monitoring inflation's path, currency developments, and external shocks, that is US tariffs or global commodity moves. In public comments, he emphasized preserving supervisory tools and using case-by-case judgment for areas like acquisition financing, indicating a cautious technology and finance-aware approach. Risks that could limit easing: a sharp, persistent fall in the rupee, imported inflation, or an unexpected pickup in core inflation would force the RBI to reassess. Geopolitical shocks, higher commodity prices, oil, or renewed supply side constraints could unwind the low inflation case. So that's the overall content I wanted to discuss through this video. I hope you like the content and get some understanding. If you are very novice, or if you are aligned but somehow you missed these details, so that these details would have definitely given you a quite good information to understand the monetary stance of India as of December 2025. Thank you so much for your time. I'll see you in the next video.